जिन्हें मन सियासत का है दावा, उन्हीं की राख बन जाए तो अच्छा। तपश कब तक सहें सोज दरों की, ये शोला राख बन जाए तो अच्छा। Politics, written by W.B. Yeats. In our time, the destiny of man presents its meaning in political terms. Thomas Mann. How can I, that girl standing there, my attention fix on Roman or on Russian or on Spanish politics? Yet here's a travelled man that knows what he talks about, and there's a politician that has read and thought, and maybe what they say is true of war and war's alarms. But oh, that I were young again and held her in my arms. फ्रेंड्स, ये पोएम पॉलिटिक्स और लव के कंट्रास्ट पर मबनी है, यानी सियासत और मोहब्बत के मुवाज़ने पर मबनी है। और नज़म में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि ज़िंदगी में सियासत की निस्बत मोहब्बत ज़्यादा अहम है। शायर इस नज़म को थॉमस मैन के इस कॉल से शुरू करता है कि हमारे दौर में इंसान की कदर व कीमत का अंदाज़ा सियासी इस्लाहात में बयान किया जाता है। मुराद ये है कि सियासी कारनामे ही इंसान की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं, मगर शायर इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखता है। पोएट कहता है कि मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस लड़की की मौजूदगी में मेरा जहन रोमन, रशियन और स्पेन की सियासत से हट गया। सियासतदान स्टडी करते हैं, सोचते हैं, जंग और उसके खतरात का जिक्र करते हैं। मुमकिन है उनकी बातें दुरुस्त हों। एक तजुर्बाकार शख्स की राय जिसने दुनिया भर का सफ़र किया हो, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रूप देखे हों, बैनुल-अक़वामी सियासत को स्टडी किया हो, मुमकिन है मुस्तनिद हो, मगर ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मोहब्बत है। शायर अगरचे अब बूढ़ा है, मगर ख्वाहिश करता है कि वो जवान होता और सियासत को झटक कर उस लड़की को, जो जवानी और मोहब्बत की अलामत है, अपनी आगोश में ले सकता। W.B. Yeats was born in 1865 and died in 1939. His aims were to write for an Irish audience and to recreate specifically Irish literature. He took an active part in the movement known as the Irish Literary Renaissance. फ्रेंड्स, येल रिव्यू नाम के एक रसाले में यीट्स से एक सवाल पूछा गया था कि एज राइटर उनका जो टैलेंट है पॉलिटिकल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है। उसके जवाब में यीट्स ने ये पोएम लिखी थी पॉलिटिक्स के नाम से, जिसमें उसने सजेस्ट किया है कि रियलिटी ऑफ लाइफ जो है वो पॉलिटिक्स है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खूबसूरती है ज़िंदगी की, दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ ए ह्यूमन, that is the real beauty of a girl. Yeats wrote this poem suggesting that he is not really interested in politics as a poet. The poet says that he sees a young girl standing in front of him. He is impressed by her beauty. He says that in the presence of such a charming girl, he cannot concentrate on Roman or Russian or Spanish politics. The poet disregards politics and accepts love. Politics is thought to be a source of power and glory. The poet does not deny the political reality. He begins the poem with Thomas Mann's quotation, "In our time, the destiny of man presents its meaning in political terms." It means that in modern times, the destiny of a nation depends on its politics. The poet believes that this may be true as an abstract truth, but there is a greater reality, the reality of love. Things like politics, war, and peace may be mightier and significant, but the real thrill lies in the feeling of love for a young and beautiful girl. Love is something which flows through our vein, and we know it by the throbs of our heart. The theme of this poem is contrast between politics and love.
This is a short poem, but it shows the poet's deep consciousness of the tragedy of human life. As such, the poem contains an element of pathos. The poet laments over his vanished youth. He feels a sense of loss. We may disagree with the choice of the poet, but his realization of the inability to love in old age is keen. The girl in the poem stands for youth and love. The language used in the poem is very simple, but the thoughts are deep.